Hello students, hope you all are well. Let us start our next video on the basis of elements of accounts standard 11 part 2. The last video I taught you the illustration as well as exercise questions. This video, two illustrations I will do from your textbook, which is little difficult. The adjustment whatever it is given, that calculations, it is very necessary to know how to calculate it. Every one of you follow these illustrations, then we will do the exercise sum in the next video. Page number 174 according to your textbook. Page number 1 second I want to repeat, 174 of illustration number 27. I am reading the illustration number 27. First you will read it and take decision what is given in this illustration, what is not given, and whatever the accounts debit and credit it is given in the trial balance. First you come to know where it will go, means posting. All of you know in your final account or annual account there the total 6 places are there. Out of these 6 places where it will go, posting which place you will do, that you come to know. After that adjustment I will tell one by one. So let me read the question first. Illustration number 27. Prepare the final account from the following trial balance as on 31st/3/2015 of Puspa. Which date is 31st/3/2015? Date is most important that you have to know. This is trial balance is given. This is debit column and this is the credit column. Debit column posting I am telling that also you will follow the posting. Drawings is 24,000 because debit column amount is drawings and credit column amount is capital. Drawings is 24,000, that is less from capital, and capital is 3 lakh, it is liability. Purchase 2,96,000 trading account debit sides and sales 8 lakh trading account credit sides. Goods return 80,000 debit, that is sales return less from sales, and goods return 20,000 credit, that is purchase return less from purchase. Provident fund contributions and provident fund, this you have to know. This is the new item in your sums. Before that you did not get the provident fund contributions and provident fund. Here provident fund contributions and provident fund, which one is the provident fund contributions and which one is the provident fund, that also you have to come to know, because provident fund is the liability, it is a credit. The provident fund is always credit balance. Contributions of the provident fund is expense, it is debit balance. Once if you able to know whether it is a expense or income or assets or liabilities, then automatically posting you can understand where it will go, because postings provident fund contribution, if it is a expense, so obviously it is not assets or not a liability. It will not go to the trading account credit sides, it will not go to the profit and loss account credit sides, either it will go to the trading account debit sides or profit and loss account debit sides. So it is contributions provident fund, provident fund contribution is a expense, so it will go to the profit and loss account debit side of 10,000, and provident fund is the credit balance liability, it is the 1 lakh is your liability. So provident fund is the liability, contribution to the provident fund is the expense, profit and loss account debit. Next, once again it is like that. Provident fund investment and interest on provident fund investment. Provident fund investment is your assets. Interest on provident fund investment is your assets, that is 1 lakh. 1 lakh is your assets, and interest on the provident fund investment, that is 8,000. That treatment 2 ways are there. Some of the students are writing in the provident fund credit sides, and some of the students it is adding with the provident fund investment. That also you can do. provident fund का साथ ऐड किया, नॉट इन्वेस्टमेंट, provident fund का साथ ऐड किया. सो इसका 8,000 जो है, ये 8,000 का 2 टाइप ऑफ पोस्टिंग होता है, बट वी विल फॉलो एनी वन. दिस 8,000 इज द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन द provident fund इन्वेस्टमेंट. तो provident fund का जो है वो provident fund 1 लाख है, ये 1 लाख का एगेंस्ट में इंटरेस्ट है, इसलिए दैट विल ऐड विद द provident fund इन द लाइबिलिटी साइड्स. Once again you follow. 10,000 is the profit and loss account debit, this 1 lakh is your liability, this 1 lakh is your assets, and this 8,000 you will add with the provident fund. Debtors 2 lakh assets, creditors 1,50,000 liability, discount
This is called discount allow, which is 46,000. That is your profit and loss account debit. 14,000 is the profit and loss account credit, that is discount received. Bad debt is 30,000, that is profit and loss account debit. Bad debt reserve 45,000, it will deduct from the TAT formula. Bills receivable 15,000 assets and bills payable 25,000 liabilities. Goods stock 1/4/2014 80,000 is your opening stock debit. Well, trading account debit to opening stock. Trading account debit because it is called the opening stock. 1/4/14 your accounting year is 1/4/14 to 31st/3/2015. So goods stock of rupees 80,000 is the opening stock, which will come trading account debit side. Next is coming demurrage is one type of loss, trading account debit sides. It is factory related loss. Tolai is also factory related expense, so it is trading account debit side. Custom duty also trading account debit side. These three items you got new: demurrage, tolai and custom duties. Trade expense, it will not go to the trading account, though it is written trade, but trade expense will come profit and loss account debit side. Cash balance is your assets. Bank balance is also assets. Fixed assets is your assets. Cash balance is assets. Bank balance is also assets. Fixed assets is also assets. Cost price of rupees 5 lakh, but here it is given 4 lakh. 4 lakh you will write it, and advertisement expense of rupees 28,000, which will come profit and loss account debit sides. Both the sides 14,62,000. Here also 14,62,000. Posting is over. Now we will do the adjustment. Adjustment one by one I want to show you, and where calculation is required, there I will show how to calculate it. First adjustment, the stock as on 31st/3/2015 is rupees 2 lakh, out of which the market value of 30% stock is 20% more and market value of 50% stock is less by 10,000, whereas the remaining stock need repairing expense of rupees 2,000. That calculations I will show it. Next, goods of rupees 5,000 given as advertisement. Number 3, it is given credit sale of rupees 10,000 wrongly recorded in as credit purchase. Number 4, write off 20,000 as bad debt from the debtors and provide 10% bad debt reserve. Number 5, calculate 10% interest on the capital and 5% interest on drawing. Number 6, calculate depreciation at the rate of 10% on the FL, fixed assets as per the straight line method. First you come to know the first one, adjustment. Where it will go, that every one of you know. One will go first effect closing stock, trading account credit side, and second effect balance sheet asset sides. That posting, where the effect will come, that you know, it will not go, it will not add with anybody, it will go separately. But amount, how much you have to calculate it. How much is the closing stock? Sometime it may be given directly, sometime it may not be given directly. You have to calculate the amount of closing stock. Here you have to calculate the amount of closing stock. The formula how to calculate the amount of closing stock, every one of you know. The cost price or the market price, whichever is less, is called closing stock. So what I have to do, I have to calculate the CP and MP individually. What percentage is given on the basis of that? It is given the stock as on 31st/3/2015 is rupees 2 lakh. So your CP, it is given 2 lakh. How do you know it is a CP? Nowhere it is mentioned it is CP, but it is given stock as on 31st/3/15 is 2 lakh. After that it is given out of which market value. So market value is not given, but which you have to calculate. So this is called CP. Now MP. MP is called market value. How to calculate MP? It is given 30% of the stock is 20% more. So here I have to calculate the MP in such a way that number 1 it is given 30%. 30% of 2 lakh is coming 60,000. Or it is given 20% more and 50% of the stock is less by 10%. Number 2, it is given 50%. 50% means 1 lakh. And what is left? That is 20% is left. 20% means 40,000. Now try to understand.
This is all CP. This CP 2 lakh that I have divided into 30%, 50% and 20%. 30% of 2 lakh is 60,000. 50% of 2 lakh is 1 lakh and 20% of 2 lakh is, so this is all CP. If you add it, you will get total 2 lakh. Now MP of these three has been changed. Now let you know how to calculate the market value of this particular, matlab one cost price 2 lakh that I calculated in the three parts. Okay. Now 30% जो stock है that was increased by 20% more. तो 60,000 का ऊपर 20% ऐड करो तो 60,000 का 20% आता है 12,000. दैट मीन्स उस जिसको 60,000 CP था उसका मार्केट प्राइस हो गया 72,000, 72,000. दैट यू अंडरस्टैंड, बिकॉज 30% का स्टॉक का 20% बढ़ गया, इसका 20%, इसका 20% होता है 12,000. और दूसरा क्या बोला, 50% स्टॉक को 10% लेस हुआ. 50% स्टॉक को 10% लेस हुआ मतलब 1 लाख माइनस 10%, लेस मतलब माइनस ऑफ ₹10,000. 1 लाख का 10% is 10,000. It became 90,000. And third one, they did not say anything, मतलब there is no change at all. Third one became as it is 20,000. Now how to calculate? You have to calculate this amount and this amount, whichever is less you should take it. You have to take this amount and this amount, whichever is less that you have to take it. This is 40,000, not 20. And you have to take this amount and this amount, whichever is, these are both same. So your closing stock will be 60, 72 means 60. 90, 1 lakh plus 90 मतलब 90, whichever is less, and 40 मतलब 40. तो 1,90,000 is your value of the closing stock, which will go. Okay, acha, still one last last one sentence is left. Whereas the remaining stock need repair. अच्छा, ये मैंने देखा नहीं था. Whereas the remaining stock need repairing expense of ₹2,000. मतलब remaining stock मतलब this is 20%. उसको repairing expense ज़रूरत है 2,000, मतलब यहाँ भी उसको 2,000 लेस होगा. तो 40,000 का जो स्टॉक है उसको मार्केट प्राइस 38,000 हो गया, not 40. Last sentence I have not seen. It is given जो 20% स्टॉक विच इज 40,000 मार्केट में उसको 2,000 रिपेयरिंग जरूरत है, मतलब एट प्रेजेंट उसका वैल्यू 38 है. सो 40 एंड 38 का डिफरेंस होता है या लेस होता है, विच इज लेस मतलब 38 इज लेस, सो दैट इज कमिंग 1,88,000. So 1,88,000 is your closing stock. That two places it will go. One it will go to the trading account credit side, another it will go to the balance sheet asset sides. See your answer. One buy closing stock 188. Have even here you will see the closing stock of rupees 1,88,000. Two places over. Next, goods of rupees 5,000 given for advertisement. So one will go less from purchase and there will go profit and loss account debit side expense. तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम परचेस ऑफ रुपीज़ 5,000. देखो कोई जगह होगा, देखो गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट लेस फ्रॉम परचेस, फर्स्ट इफेक्ट हाउ मच 5,000. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड कोई जगह पे होगा दैट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 28,000 प्लस गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट 28 प्लस 5 इज इक्वल टू 33. तो फर्स्ट इफेक्ट less from purchase, second effect it will be added with the advertisement. If advertisement expense is not there, then it will go separately. Number 3, credit sale of rupees 10,000 wrongly recorded as credit purchase. ये इंटरेस्टिंग है, आपने गुड्स बेचा था लेकिन गुड्स हाँ यस यू सोल्ड, क्रेडिट सोल्ड, आपने गुड्स बेचा था बट रिकॉर्ड हो गया परचेस में. तो क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज़ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेस. पहले क्रेडिट परचेस में जो रिकॉर्ड हो चुका उसको आप माइनस कर दो. हाउ मच 10,000. तो क्रेडिट परचेस का साथ 10,000 देखो यहाँ है, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज परचेस, परचेस से रिकॉर्ड हो गया
परचेस था 2,96,000, सो रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस में रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए परचेस से लेस हुआ, और परचेस से लेस होगा तो क्रेडिटर्स के साथ भी लेस होगा, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स 1,50,000 माइनस 10। क्यों? परचेस के साथ क्रेडिटर्स का रिलेशन है, सेल का साथ डेटर्स का रिलेशन है। अभी क्या है, दो इफेक्ट हुआ, और दो इफेक्ट, इसका 4 इफेक्ट होगा। क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज़ 10,000, अभी क्रेडिट सेल 10,000 जो हुआ हो तो 10,000 में यह रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए वो सेल का साथ सेल था ये 8 लाख, 8 लाख प्लस एक्चुअली 8,10,000 यहाँ रिकॉर्ड करना था, लेकिन गलती से यहाँ रिकॉर्ड हो गया, तो यू हैव टू ऐड विथ सेल्स एंड ऑल्सो यू हैव टू ऐड विथ डेटर्स। देखो डेटर्स का साथ 2 लाख का साथ 10,000, तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट का 4 इफेक्ट आता है। 1, आपने जो गलती किया उसको करेक्शन करना है, और आपने जो नहीं किया उसको करना है, मतलब थर्ड एडजस्टमेंट, सॉरी नॉट सेकेंड, थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट का 4 इफेक्ट आता है। 1, व्हाट यू हैव डन द रॉन्ग दैट यू करेक्ट इट फॉर दैट 2 इफेक्ट, another one what you have not done that you do it again 2 इफेक्ट। सो परचेस में रिकॉर्ड हो गया, परचेस से माइनस करो और क्रेडिटर से माइनस करो, और क्रेडिट सेल्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो सेल्स में ऐड करो और डेटर्स का साथ ऐड करो। राइट ऑफ 20,000 एज ए बैड डेट फ्रॉम द डेटर्स एंड प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व। डेटर्स का साथ आओ, 2 लाख डेटर्स था प्लस 10,000, 2,10,000 हुआ, लेस बैड डेट 20,000। ये 20,000 बैड डेट टैट फॉर्मूले में मैंने तुमको बोला था, द बैड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ₹30,000 प्लस TAAT and bad debt of adjustment is 20,000. Now bad debt reserve 10%. 10% of 1,90,000 is 19,000. So 1,90,000 minus 19 is equal to 171. And this is 19,000 you have to add here, and you have to deduct the 45,000. I told that when I told bad debt reserve 30, this is 45. So 45 will be deducted and outside is going to 24,000. Calculate 10% interest on the cap. Interest capital का ऊपर 10% interest calculation add कर दो, add with capital and formula second debit side। देखो कैपिटल 3 लाख था, 10% ऐड हो गया 30,000 फर्स्ट इफेक्ट, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में कोई जगह होगा ही होगा 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 इंटरेस्ट, देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐड विथ ड्राइंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड्स। ड्राइंग था आपको 24,000, उसको इंटरेस्ट ऐड हो गया 5%, 24,000 का 5% आता है 2,400, ड्राइंग का साथ ऐड हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड विथ कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड विथ ड्राइंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड्स। Calculate depreciation 10% on fixed assets as per the straight line method. Actually, one more chapter I already told you, the when I taught the depreciation, that time you might have seen that straight line method, reducing balance method. Straight line method means you have to calculate the depreciation on the fixed assets on your CP, if CP is given in this question. Question में CP दिया ही होगा, तो 10% on fixed assets which is 4 लाख, 4 लाख का ऊपर 10% 40,000 will not come. 5 lakh का ऊपर 10% 50,000 will come because this is straight line method. So fixed assets is 4 lakh less depreciation 50,000 is equal to 3,50,000, and here also you will get the depreciation on fixed assets is rupees 50,000. और internal adjustment sum में कोई नहीं था, इसलिए we have not calculated any internal adjustment sum. Now remaining part already you know that I do not want to waste the time, that you have to calculate it and find out the balance which is coming gross profit, that coming 555,000, and that you have transferred to the formula shown credit side 555,000, and you got the net profit which is 2,87,200 that you have added with the capital. कैपिटल के साथ इंटरेस्ट में कैपिटल ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, बाद में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिडक्ट किया, that you are getting 5,92,000, and remaining amount already you come to know. This is provident fund. I told you previously when I done the posting that provident fund interest and provident fund investment that you add with the provident fund. बाकी तो this side में everything you got it, and both the sides you will get 8,65,000. This is called 8,65,000, and calculation of the closing stock which I have shown, that is given in your textbook here, that also you will try to understand. 28 number illustration, that day I told you. 29th is little hard or complicated, that all let me explain it. Then
I will go back some of the sums from your exercise. So let me see the 29th. From the following trial balance of Abhishek as on 31st 3 2015 and the additional information prepared the final account as on 31st 3 2015. 31st 3 2015 का फाइनल अकाउंट बनाना है. What is given? Posting all of you know. Capital, liability, drawing, less from capital, opening stock, trading debit, purchase, trading debit, sales, trading credit, goods return 30,000 less from sales, 50,000 less from purchase, salary profit and loss account debit, audit fees profit and loss account debit, rent and insurance profit and loss account debit, stationery and printing profit and loss account debit, अनपेड सैलरी. अनपेड सैलरी ट्रायल बैलेंस में होगा तो सैलरी का साथ ऐड नहीं करना है. कीप इट माइंड. अनपेड सैलरी एडजस्टमेंट में देगा हो तो ऐड विथ सैलरी एंड लाइबिलिटी. As it is given in the adjustment, it will have the two effect. But unpaid salary, if it is given in the trial balance, it will have the single effect and it will go to the liability sides. Prepaid insurance premium, same thing. Insurance premium के साथ कोई effect नहीं आएगा, सीधे जाएगा कहाँ? Assets में. Prepaid insurance premium is your assets, duty and import goods trading account debit sides, commissions credit profit and loss account credit sides, debtors assets, creditors liability. That is assets is 1 lakh and liability is 80,000. Building is your assets. Additional of the building, add with this building, that is also assets. Machinery, vehicles, bills, these all three are assets. Machinery of 1 lakh is assets. Vehicles of 50,000 is assets. Bills of 10,000 is assets, and 15,000 is bills payable. This is bills receivable and this is bills payable. So this is assets, this is liability. Dividend is your income, profit and loss on credit side. Investment in ABC and company shares, it is your assets. डेबिट में है इसलिए एसेट्स है, और क्रेडिट में होगा तो लाइबिलिटी. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दैट यू राइट इन द एसेट साइड्स. फर्नीचर इज योर एसेट्स. मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड्स. अच्छा, दिस साइड भी ऑल्सो इज गिवन. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड्स. बोनस इज योर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एंड डिस्काउंट 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट. This is called discount allowed. This is called discount received. Both the sides 12,10,000. Now adjustment 7s are given. 7 adjustment it is given, and internal adjustment 1 is given, that is regarding the building. That we will show it how we will do it. Number 1, closing stock of rupees 2,10,000. Sorry, 2,01,000. 2,01,000, which is included the stationery stock rupees 1,000. Market value of the goods of 20,000, out of which goods stock is less by 20%. Again, you know how to calculate it. That I want to show it here. There you will follow it. This is illustration 29 ना. हाँ 29. अच्छा, नीचे 76 ही है. Same illustration, same is going on, no? This is illustration 29 of page number 181. Page number 181. Same video is going on. Number 1 adjustment. It is given the closing stock is 2,01,000. 2,01,000. Out of which is included stationery stock of rupees 1,000. ये जो stock है, this stock is the goods stock. But here it is given the stock of goods plus stationery. दोनों का मिलके 1 लाख. उसके अंदर स्टेशनरी स्टॉक होता है 1 लाख. तो लेस करो, STATIONERY, स्टेशनरी stock is 1 lakh. So you are having the good stock is 2 lakh. करेक्ट. 2 लाख का गुड स्टॉक है और 1 लाख का स्टेशनरी है. दोनों मिक्स कर दिया. बाद में बोला द गुड स्टॉक, द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ रुपीज 20,000, आउट ऑफ विच द गुड स्टॉक इज लेस बाई 20%. इसका जो 20% कैलकुलेशन करो तो इसका 20% आता है कितना? 40,000.
बराबर ना। और 80% आता है कितना, 1,60,000, करेक्ट, दोनों मिलके 2,00,000। 20,000 जो स्टॉक है 20%, नो नॉट 20%, सॉरी मैंने कुछ गलती किया। मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ 20,000, अच्छा सॉरी 20,000 मतलब 10%, 10% एंड 90%। 10% स्टॉक विच इज 20,000 एंड दिस इज 90 मतलब 1,80,000। ये जो 20,000 का गुड्स का वैल्यू क्या हो गया, इट इज़ लेस बाय 20%। तो ACP अभी MP में क्या हो गया इसका, MP में हो गया 20,000 माइनस 4,000, किसका चला जाएगा 20% ऑफ 20,000, तो इसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया 16,000। और ये 1,80,000 का क्या था, 1,80,000 था। अभी क्या करना है, ये दोनों का अंदर कौन सा लेना है 16, और ये दोनों का अंदर कोई भी एक, दोनों बोथ आर सेम, तो यू आर गेटिंग 1,96,000, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो 1,00,000 है दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के साथ जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आई विल शो इट, डिडक्ट होगा बाद में। तो 1,96,000 is getting C by closing stock 1,96,000 first effect, and second effect balance sheet assets at 1,96,000, correct. Next you are getting unrecorded credit sales। अच्छा स्टेशनरी का भी कंप्लीट कर देता है। स्टेशनरी कितना था, स्टेशनरी था 5,000, देखो 5,000 का था। अभी क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी से डिडक्ट होगा, ये जो 1,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो 1,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 1,000 लेस फ्रॉम स्टॉक एंड एसेट्स, इसका फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट। मतलब ये जो 1,000 था, दिस 1,000 का फर्स्ट इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड बैलेंस शीट एसेट साइड कोई जगह होगा, देखो स्टेशनरी स्टॉक ऑफ ₹1,000, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ओवर। Unrecorded credit sale, add with sales and add with debtors, that all of you know how much, 10,000, add with sales and add with debtors। debtors कहाँ लिखा आपने, ये देखो 1,00,000 प्लस 10, 1,10,000। Unrecorded credit sale, add with sale, add with debtors। Unrecorded credit purchase, add with creditors, याद रखना है। Vehicles are purchased on 31/12/2014. Scrap value of the vehicles of ₹10,000 and estimated lifetime is 5 years। Vehicles क्या था, इसमें बिल्डिंग था और यहाँ व्हीकल्स था। व्हीकल का कितना था 50,000। अभी व्हाट इज दिस, 50,000 का व्हीकल्स आपने परचेस किया था 31/12/2014 में। स्क्रैप वैल्यू 10,000 है एंड एस्टिमेटेड लाइफ टाइम्स इज फॉर 5 years। हाउ टू कैलकुलेट इट डाउन, यू सी इट हियर। नंबर this is 3, calculation depreciations of vehicles, ओके। व्हीकल्स था कितना 50,000, परचेस प्राइस 50,000 लेस स्क्रैप वैल्यू 10,000, 40,000, एंड दिस 40,000 विल वर्क फॉर 5 years, मतलब 40,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8,000 इज योर डिप्रिसिएशन। दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट दैट। चैप्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रीवियस सेकेंड चैप्टर। नाउ व्हीकल्स कहाँ है, ये देखो डिप्रिसिएशन 2,000 इज 40,000, 5 years को, एक मिनट। व्हीकल्स आर परचेस्ड ऑन 31/12/2014। ओ अच्छा, हाँ ठीक है क्या, लेकिन ये जो 8,000 है, दिस 8,000 फॉर होल ईयर, फुल ईयर, बट यू हैव परचेस्ड द व्हीकल्स ऑन द एंड ऑफ December,
December means you have to calculate the depreciation for January, February, March, 3 months. तो पूरा साल का 8,000 होगा, तो 3 months का कितना होगा? 2,000. How to calculate? 8,000 divided by 12 multiply by 3. You will get 2,000. 2,000 is your depreciation. If whole the year होता था तो 8,000 होता था. As you have purchased the vehicles on end of December, so you have to calculate the depreciation only for 3 months. Clear to you? Understand what I am telling? That you have to follow it very deeply, then only you will understand. So once again you try to understand whatever I am telling it here. Depreciations on the vehicles which you have to calculate 50,000, but scrap value was 10,000, मतलब still it is left. स्क्रैप में भांगड़ में आप बेचा था 10,000, तो आपका एक्चुअली व्हीकल्स का जो डिप्रिसिएशन हुआ वो 40,000, लेकिन 40,000 विल बी डिवाइडेड फॉर 5 years. दैट मीन्स ईच ईयर विल बी 8,000. बट if you have purchased the vehicles on 1/14, then 8,000. But as you have purchased the vehicles on the December of the first year, so you have to calculate the 3 months. If the whole the year is 8,000, so 3 months is coming 2,000. Next year you have to calculate amount, you have to write 8,000. Now the next is number 4. Calculate depreciation of the building at the rate of 10% and rate of depreciation of the machinery is rupees 15,000. First you come the building. बिल्डिंग का 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है. बिल्डिंग था कितना? बिल्डिंग था एक 2 लाख और एक 50,000. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. एक 2 लाख था और एक 50,000 था. 2 लाख जो था और 50,000 जो था वो 31/12 में. नाउ दिस इज 4th एडजस्टमेंट. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एक था रुपीज़ 2 लाख का. कितना परसेंटेज कैलकुलेशन करना है? 10%. 2 लाख पर 10% फुल ईयर कितना आएगा? 20,000. और एक आएगा 50,000 का ऊपर 10%, बट इट इज यू हैव परचेज दिस वन ऑन 31/12/14. 31/12/14 मीन्स 3 months. तो 50,000 का ऊपर 10% आता है कितना? 50,000 का 10% आता है 5,000. 5,000 इज फॉर होल द ईयर एंड 3 months इट विल डिवाइडेड बाई 4. दैट मीन्स 1,250 आई थिंक सो. लेट मी चेक इट. 1,250 correct. 21,250. So it is coming 21,250. You understand how it is calculated? This is 5% of 10% is coming 5% of 50,000 is coming 5,000 is for whole the year. और 3 months के लिए आएगा तो 5,000 divided by 12 multiply by 3. That if you do it you will get it, because this building you did not use for whole the year. This building you have used for 3 months. So add with build, sorry, less from building and प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड कोई जगह होगा. ये देखो 21,000. अब व्हीकल्स का भी 2,000 आ गया. नेक्स्ट नंबर मशीनरी. मशीनरी का ऊपर 15%. सिमिलरली ऑल ऑफ यू नो मशीनरी 1 लाख था, उसका डेप्रिसिएशन 15,000, तो 85 आउटसाइड एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड 15,000. नेक्स्ट इज कमिंग परचेज ए फर्नीचर ऑफ 5,000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट. तो परचेस अकाउंट में डेबिट हो गया तो पहले उसको कैंसिल करो. तो लेस फ्रॉम परचेस 5,000 एंड लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स ऑल्सो. लेस फ्रॉम परचेस एंड लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कहाँ है? 5,000 क्रेडिटर्स 80,000. एक मिनट. ओ परचेस ए फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट. अच्छा, परचेस अकाउंट को डेबिट हुआ तो लेस फ्रॉम परचेस एंड फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं हुआ. इज नॉट इट. तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं हुआ. तो फर्नीचर कहाँ है? यहाँ है.
फर्नीचर 50,000 है, वहाँ से 5 ऐड करो। एक्चुअली फर्नीचर का साथ ऐड होना चाहिए, फर्नीचर का साथ ऐड नहीं हुआ, लेकिन परचेस का साथ ऐड हो गया। तो लेस फ्रॉम परचेस इज द फर्स्ट इफेक्ट एंड ऐड विथ फर्नीचर इज द सेकेंड इफेक्ट। ओके, द फर्नीचर purchase on 11014 and rate of depreciation on the furniture is ₹10,000। ये फर्नीचर आपने जो परचेस किया वो 110, तो 5,000 का जो फर्नीचर परचेस किया वो उसका डिप्रिसिएशन 10% पर 6 मंथ कैलकुलेशन करना है। यहाँ देखो 50 5 + 5 10, फर्नीचर का था कितना, फर्नीचर 5,000 ही था। यहाँ हाउ मच फर्नीचर अकॉर्डिंग टू योर पोस्टिंग द फर्नीचर हाउ मच इट वॉज देयर, ये 5,000 बराबर। यू हैड ए फर्नीचर 5,000 और यू परचेस द फर्नीचर 5,000, बट ये फर्नीचर आपने परचेस किया था 6 मंथ का बाद, तो टोटल मिला के 10,000 हुआ। अब आपका क्वेश्चन आएगा 750 डिप्रिसिएशन कैसे हुआ। ये 5,000 के ऊपर 5 कितना परसेंटेज, 10%, 10% ना, यस। ये 5,000 के ऊपर 10% आता है 500, और ये 5,000 के ऊपर 10% आता है 500, लेकिन 6 मंथ का होगा 250, तो 250 + 500 750। फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट 750 will come here, that is deducted from profit and loss account debit sides। Next is coming the 6% interest on capital। Calculate interest on capital 6%, that every one of you know, add with capital and write profit and loss account debit side। But additional capital of 1 lakh was brought into the business on 1/1। तो कैपिटल कितना था, कैपिटल था 4 लाख, 4,40,000 था, एक मिनट, 5,40,000, यस 5,40,000 कैपिटल था कुल मिला के। ये देखो 4,40,000 और 1 लाख, 5,40,000, 4,40,000 और 1 लाख 5,40,000। 4,40,000 का 6% पूरा साल का कैलकुलेशन करना है, और 1 लाख का 6% कब तक कैलकुलेशन करना है, ब्रॉट इन 3 मंथ का। आई विल नॉट शो, यू विल डू इट। 4,40,000 का 6% पूरा साल का, 1 लाख का 6% 3 मंथ का। इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 27,900, दैट इज ऐड विथ कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड्स। Expense incurred in the advertisement campaign in the beginning of the year is transferred to the advertisement suspense account. This suspense is to be written up for 5 years. Advertisement suspense, how much you wrote? Advertisement suspense account you wrote 12,000. Where you wrote advertisement suspense account 12,000, advertisement suspense account 12,000 you wrote in the, where you wrote 12,000 advertisement suspense account, it is asset side, somewhere you have written advertisement suspense account posting, how much it is, oh sorry, not 12,000, I am searching 15,000, sorry. Advertisement suspense account is not 12,000, 15,000 that you wrote. I told you write in the asset side, you wrote in asset sides, but this will work for 5 years. That means every year 3,000, just like the fixed assets you have to deduct the depreciation. So 15 minus 3, this is how 3 comes, 15,000 divided by 5 is equal to 3,000. First effect, and profit and loss account debit side कोई जगह होगा ही होगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ हो गया, इंटरनल एडजस्टमेंट जो था वो भी हो गया। तो आफ्टर डूइंग दिस पोस्टिंग एज वेल एज एडजस्टमेंट, योर सेकेंड वर्क इज देयर, the amount which you wrote in the inner column that has been transferred to the outer column or not, you check it. If it is not sent out except capital, then you send to the outside. Sometime you might have forgotten, you wrote in the inner column but there was no adjustment. ऐसा भी आपको कभी कभी गलती है, such type of mistakes may be there. आपने सोचा था उसके साथ एडजस्टमेंट है, आपने इनर कॉलम में लिख के रखा था, लेकिन उसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए वो अमाउंट इनर में रह गया, उसको आउटर में भेज दो। चेक करने के बाद यू क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट एंड गेट द बैलेंस एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड इफ यू गेट द प्रॉफिट, एंड दैट ऑल्सो यू नेक्स्ट स्टेप सेम वे you do and add with the capital your net profit, and at last you will get 7,42,000 and 7,42,000. इसके साथ मैं आपको और एक चीज़ बोल देता है, ये जो ट्रायल बैलेंस है, कभी कभी सबका क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में बोथ द साइड्स विल नॉट कम इक्वल इन योर क्वेश्चन। यहाँ इक्वल है 12,10,000 12,10,000, कोई जगह इक्वल नहीं होगा।
अभी जहाँ सपोज यहाँ 12 लाख है, यहाँ 12 लाख 10 है, यहाँ 12 लाख है, सपोज 10,000 यहाँ कम है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट हियर सस्पेंस अकाउंट एंड 10,000 क्रेडिट बैलेंस। जितना कम है वो कॉलम में सस्पेंस अकाउंट लिख देना है। और इफ इट इज द सस्पेंस अकाउंट कम्स इन द क्रेडिट साइड, इट इज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी. If suspense account comes in the debit side, it will be treated as an assets. Okay. Once again, I want to tell you, if you watch this video one time, it will not be enough for you. At least 2 times you read the question and watch my video. Then if you do not understand any place, you will tell me. Okay. Bye. All the best.